Welcome to Code to Cortex. Today we will be solving this lab from Arcade Level 1 January as the last lab. Lab name is Compute Engine Quick Start Windows. पहले हम Start Lab करेंगे, उसके बाद हम इसे एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे. Like I understand. I agree. Then agree and continue. यहाँ के हम पहले टास्क 1 पे जाएंगे जो है क्रिएट वर्चुअल मशीन इंस्टेंस. इसके लिए हम कंप्यूट इंजन से वीएम इंस्टेंस में जाएंगे. Then हम क्रिएट इंस्टेंस करेंगे. And then with any random name you can create an instance. Let's select your project ID as the instance name. You can use any name for region. Mine is US4. आपका अलग भी हो सकता है तो उस पर आपको ध्यान देना है. Series is Z2. Now in the OS and storage, operating system is Windows Server. And the version is 2022 data center. Now we have to create the instance. You will wait. After you see a check mark here, इधर वापस आके एक बार check my progress करना है. And it's done. अब हमें नोटपैड का यूज करना है. Copy this, paste it. अब वापस जाके VM इंस्टेंस के नेम को एक बार कॉपी करना है एंड इसे यहाँ से रिप्लेस कर देना है. Copy this, activate Cloud Shell, continue, then click authorize. Paste it. And it's completed. Now I will copy this command again, come back here, paste it, and replace the instance with the actual instance name. You
can select any username. So I will select, copy this, paste it. Now for this, it said that we have to use capital Y. Check progress, and it's completed. Congratulations, you have completed the lab. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस के अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। नाउ जस्ट एंड द लैब एंड डन।